We'll begin our session today, sir. A session on building AI readiness in Gujarat. I see a lot of enthusiasm. The students on our YouTube channel from 6 to 12 standard. So all the students who are enthusiastically use karo છો. So all those are based on artificial intelligence, and the technology of the future is AI. So I appreciate your enthusiasm to learn about artificial intelligence. So this is a joint. A warm good afternoon and a warm welcome to all the students and teachers who have joined for this session on demystifying. Okay, so just a moment. Yeah, thank you, Dr. Payal. And with me, I have my colleague Sapna Best. We are from Intel AI for Youth program. Is doing with in collaboration with GUJCOST to make or empower the youth of Gujarat to become AI ready. So this session will be in this session we shall be talking about artificial intelligence, machine become intelligence, and more importantly, what are the different domains of AI or artificial intelligence. This can be taken as the kind of a first step. आपका ये artificial intelligence की तरफ पहला कदम आप इसको इस सेशन को आपका जो AI के बारे में आप लोगों को बहुत बेसिक और इंफॉर्मेशन और जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे. सो AI एक्चुअली है क्या. आप लोग आज की जनरेशन है एंड ऑल ऑफ यू आर वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी. आप लोग डिजिटल नेटिव्स हैं और आईसी टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से जानते हैं एंड यू लव प्लेइंग की बात करते हैं. गूगल पर आप लोग गूगल सर्च करते हैं या अगर फोन में हमारे पास गूगल, हम सब लोग अलेक्सा के बारे में ना केवल जानते हैं बट अलेक्सा को काफी अच्छे से यूज भी कर रहे हैं. बट ये सारी चीजें जो हम लोग चाहे अलेक्सा हो चाहे गूगल का असिस्टेंट हो या आपका जोमेटो हो, जिस तरीके से काम करता है, स्विगी जिस तरीके से काम डे टू डे लाइफ में बड़े आसानी से हम इनका उपयोग एंड वी आर यूजिंग इट इन अ वेरी कंफर्टेबल वे. बट इसके पीछे प्रोसेस क्या है? हाउ डज दिस एप्लीकेशंस एक्चुअली वर्क? We never play this song from this movie. या एलेक्सा ये कब होगा, या एलेक्सा, तो एलेक्सा कैसे समझ जाती है कि बात कर कर उस चीज का जो है वो उत्तर डिमिस्टिफाई करेंगे. डिमिस्टिफाई मींस दैट मींस वी विल ट्राई टू लर्न, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर AI. जैसा कि मैंने आप सबके साथ बोला कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स AI, स्टार्टिंग योर AI जर्नी. आप अपनी AI की जो आपकी जर्नी है उसमें आप क्या कितना कुछ और कुछ सीखेंगे, कितना कुछ और इंटरेस्ट दिखाएंगे, कैसे आप अपने AI मॉडल्स या ऐसे AI जितने भी बच्चे जो कि इंटरेस्टेड हैं और AI के बारे में और सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, कुछ AI क्रिएट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, वी शैल बी कंडक्टिंग बूट कैंप्स फॉर ऑल दोज सच इंडस्ट्री इंटरेस्टेड on a very bright note. Once again, I welcome on behalf of Intel AI for Youth program and GUJCOST welcome you all. आप सभी का इस प्रोग्राम में सेशन में फिर से एक बार पुनः. ऑफिशियल एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब लोग भली भांति वाकिफ है. वी नो एवरीथिंग, वी नो दैट मींस yes or no. और उसके बाद जो वर्ड इंटेलिजेंस है ये एक अपने आप में बहुत, जितनी गहराई से समझने की कोशिश करें उतनी हमें नई नई चीजें जो है ये हमें बताता है. सो ह्यूमन इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, बिकॉज एंड ऑल ऑफ अस नो, हम लोग अपने स्कूल्स में हमारे टीचर्स है ना, हमारे पेरेंट्स हैं, दे ऑल टॉक कंसीडर इन सब एनिमल
स्पीशीज से इंटेलिजेंट बनाती है. व्हेन इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज इंटेलिजेंस टू मीन टू, आप में आप लिख सकते हैं, जो आपका YouTube का चैट है उसमें आप बता सकते हैं कि Anup, just one thing. So, students, if your video is lagging, then there is some problem with the internet, because we are able to hear Anup's presentation very clearly. What I would suggest is just pause your video for some time. Yeah, thank you सपना. So students, ये कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हो सकता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ आपके पास 5 सेकंड 10 सेकंड के लैग से हो रहा है, but still I think all of you are able to hear me. That's very good. And so when we are talking of intelligence, okay, now intelligence, every time we take decisions based on, we analyze things. हम लोग चीजों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, conclusion, उसको हम क्या बोलते हैं, we are taking decision making but with some rational, with some reasoning, with some questioning or learning. Learning means आपके बीच की तरफ जाते हैं, like if you go towards a fire or you are playing with deep waters, so parents और grandparents हमेशा बोलते हैं आग की तरफ मत जाइए, don't play with that चल जाते हैं. एंड सो दैट इज एन एक्सपीरियंस वी गेट, और उसके बाद फिर हम कभी आग से खेलते नहीं है, आग के करीब नहीं जाते. तो दैट इज वेयर एज ह्यूमन वी जो है हमारी इंटेलिजेंस को भी डिफाइन करते हैं. नाउ द क्वेश्चन फॉल्स दैट how does machine becomes intelligence and what actually machine does. So ये जो जितनी बातें अभी हम लोग कर रहे हैं कि how does human, question comes students, what is artificial intelligence? So what do you think is artificial intelligence? आप लोगों के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? What do you think artificial intelligence is? उसको आप कैसे डिफाइन, क्या समझते हैं इंटेलिजेंस? ओके, जब कोई मशीन मींस कंप्यूटर, ओके, व्हेन एनी मशीन और एनी कंप्यूटर स्टार्ट्स मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग अभी पीछे देख कर आए हैं, ये टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जब कोई भी मशीन इस तरीके कार्य करने लगती है, सो व्हेन एनी कंप्यूटर और एनी मशीन improves on its own from learning from past experience as we human always does, it starts predicting क्या होने वाला है या कैसे बन जाती है. Okay, so for that we need to understand with a simple analogy or with a simple example that जब अभी आप सब लोग क्लास 6 या 7 8 9 10 11 गणित की बात करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस कर पाते हैं. ओके, you can do all these calculation very quickly and very fast. But when you were into your kindergartens or in class 1, okay, that time you were not so good in इतनी अच्छे से mathematics or doing all this calculation. So there is a process. There has been all process जिसके तहत from where which actually has made you intelligent and doing on all these kind of or one. What teachers did, teacher introduced number system that 1 2 3 4 to you. Then slowly we were introduced to all the mathematical operations, जो भी हमारे mathematical operations होते हैं, plus minus multiply and divide. Then we started using those numbers and these mathematical operation together. जब भी हम कभी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ efficient and proficient. So this is how machine also becomes intelligent. Okay, so what we do here, we provide all these machine with data.
Okay, there the data could be different. There could be different kind of data sets that what to the machines as an input. Okay, when this data is provided as an input to the machine, what happens? There are algorithms. Now what do you mean by algorithms? That is some rules or instructions. We can just understand algorithm as of now कि ये works on our data and trains the machine on that data. Okay, so जब ये algorithms हमारे डेटा जो हमने डेटा एज एन इनपुट दिया है अपने सिस्टम में, उसके ऊपर machine starts doing the work what human brains does. Like they start predicting, they start taking decision, they start learning on experiences. Is trained using some algorithm, some rules, some instruction, and once that machine gets trained through that algorithm by on that data, the machine is set to known as artificial intelligence, own experience, etc. So this is artificial intelligence. Moving ahead, अब हम समझने की कोशिश जो है, मतलब गेम्स खेल के हम लोग बहुत we all of us all like playing games. So let's try to understand artificial intelligence through games. Games के माध्यम से हम AI को समझने की कोशिश करते हैं. So की कोशिश करते हैं कि ग्रेट. सो तो ये जो हमारा पहला गेम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो उसको बोलते हैं सिमेंट्रिस. ठीक है ना. अब सिमेंट्रिस इन लर्निंग, उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन पर ये गेम है, जिसमें एक लैडर ऑफ वर्ड्स दिखाई देगा, और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड होता है, इसको जो है आप इसके जो भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उससे जो है आप इस इफ आई गिव इट द वर्ड लेड, एलईडी लेड, हमें सबको पता है एलईडी लेड, क्योंकि पेंसिल लेड से बनता. फिर मैं इसको जब ये लेड देता हूं तो ये क्या करेगा, उसको मैच करेगा, और मैच करने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स देता है ये. ओके, तो यानी कि जो इस तरीके से लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 डोमेन्स है, उनमें से एक का नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो ये एआई की एनएलपी डोमेन पर इमेज ड्रॉ कर रहे थे, वो अपने उस डेटा सेट से मैप करता है, जितने भी डेटा सेट है. जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेटर का एक एग्जांपल दिखाया. सो क्विक ड्रॉ पे एक calculator has been trained upon. Now whatever image of calculator I will or we will draw, it will map our image with those 1 lakh data set of 1,20,400 plus calculators and try to map it. And as soon as we say that it is a computer vision domain of artificial intelligence. Similarly, the third game is rock paper scissors, and I know that many of you और आप में से बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में रॉक पेपर सीजर खेलते होंगे, जहाँ पर रॉक है, पेपर है, सीजर है, और आप उसको फिजिकली फॉर्म में खेलते हैं. सो यू कैन ऑल्सो प्ले दिस ऑनलाइन रॉक पेपर सीजर, जहाँ पर आप एक साथ शेयर कर रहे होते हैं. मॉडल में जो डेटा इनपुट कर रहे होते हैं वो डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दैट डोमेन इज नोन एज योर स्टैटिस्टिकल और डेटा साइंस. ओके, so these are the 3 basic domains of AI. Natural language processing, जितने भी आपके Alexas हैं, Google Assistant है, आप जो सर्च करते हैं what you say on Google, आपका जो है ट्रांसलेटर्स है, गूगल ट्रांसलेटर, आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. दे आर
आपका एक ऐसा डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां पर डेटा सेट जो है वो इमेजेस के फोग्राम फिल्टर, बिकॉज इट इज यूजिंग कंप्यूटर विजन डोमेन ऑफ एआई. सिमिलरली अगर आप लोगों ने कभी lenskart.com विजिट करा होगा, ओके, तो वहां पर एक 3D मॉडल है जहां आप केवल उसको क्लिक that how it is being possible because it is using computer vision domain of AI. और जो तीसरा डोमेन है आपका डेटा साइंस, वहां पर जो है हम लोग नंबर्स डेटा ऐसा यूज करते हैं जो नंबर्स के फॉर्म में होता है, ओके. और इसके लिए आपका जो है और वो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन कमिंग फॉल्स. Okay, just give me 1 second. Let me, there's some error, I think. So let me share my screen once again. Okay, great. So moving ahead, so let's talk about these 3 different domains. Science. Okay, now data science में हम लोग जो है what kind of data we use? We actually use numerical or alphanumerical data. Numerical data आपको रिपोर्ट कार्ड पे मार्क्स मिलते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज व्हाट इज योर न्यूमेरिकल डेटा. और जब आपको ग्रेड्स मिलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, सम सब्जेक्ट वी आल्सो गेट ग्रेड्स लाइक A+, B, C, D, वो क्या होते हैं उस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज नोन एज योर अल्फा आर्टिफिशियल डेटा साइंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और उसमें जब हम एप्लीकेशन और जब हम डेटा साइंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक हम करते हैं सबसे पहले स्कोर प्रेडिक्शन में, जो आजकल हमारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, के साथ विद दिस मच ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट हाउ मच मार्क्स ही इज गोइंग टू स्कोर. लेकिन अगर वो प्रेडिक्टिव स्कोर सही नहीं होता है, अप टू द लेवल नहीं होगा, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द चाइल्ड. सो दे आर है, they predict so correctly. yes, आजकल जब whenever you go or you plan vacation, सबसे पहले आप लोग हम सभी लोग क्या करते हैं, हम लोग जाकर उस जगह का अगले 10 दिन या 15 दिन का वेदर को चेक करते हैं कि वेदर कैसा होगा, प्लेजेंट होगा, सनी होगा, गर्मी होगा. फोरकास्टिंग साइट्स को कैसे मालूम चलता है? बिकॉज दे आर यूजिंग दिस डेटा साइंस मॉडल ऑफ एआई to predict what will be the weather tomorrow, whether it will be sunny, whether it will be raining season, or whether it will be cloudy. Then targeted advertising. Okay, all these what we can say category of data science of algorithm of artificial intelligence. Then move to the next domain. Next दूसरी डोमेन है कंप्यूटर विजन. नाउ हियर वी आर टॉकिंग ऑफ विजन. विजन मींस विजुअल, जो देख सकता है, यानी कि हमारा जो मशीन है, हम अपने मशीन को कंप्यूटर को इतना इनेबल कैसे बना देते हैं कि वो चीजों को देख पाता है, लाइक वी सी थ्रू आवर आईज. सो होती हैं, वीडियोस होते हैं, वो जब हम अपने मशीन को एज ए इनपुट देते हैं, देन वी से दैट मशीन इज यूजिंग कंप्यूटर विजन डोमेन ऑफ एआई. सो इट इज so computer vision becomes different from data science in terms of data that is being input into the machine. Data science में जहां हम न्यूमरिक और अल्फा न्यूमरिक डेटा को प्रेजेंट कर रहे थे, इनपुट कर रहे थे, यहाँ पर आप इमेजेस और वीडियो को डेटा के रूप में अपने सिस्टम आपके फेस से ही खुलता है. मींस जब आप अपने फेस को अपने फोन के आगे लाते हो, देन ओनली योर फोन in that
computer vision domain of AI is being used. Similarly, object classification. आप जब surveillance camera में use clicking the photo of that, and the Google Lens helps us language, यानी कि this is something which deals with the natural language. तो इसमें जो data है, the type of data that we provide to the machine to make our machine understand the natural language in what we speak, उन सब natural भाषा हो, यानी कि हम लोग गुजराती में बात करते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी natural फॉर्म का डेटा कैसे होता है, जब हम मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पर, या जैसे अभी आप यूट्यूब पर चैट में मैसेज कर रहे हैं, दैट इज और टेक्सचुअल और टेक्स्ट डेटा. स्पीच डेटा एंड ऑडियो डेटा इज व्हाट काइंड ऑफ डेटा? डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो फॉर्म. लाइक आई एम स्पीकिंग एंड आई एम टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू, ओके, एंड आई एम ट्राइंग टू help you understand natural language processing, and all of you are hearing me, so that is what for you is a spiritual आजकल. okay, जैसे Alexa, Siri, Cortana, या हमारे फोन्स में जो Google Assistant होता है, these are all forms of different chatbots, और ये हमारे लिए ये गाना बजा दो, ये हे गूगल व्हाट इज दिस, ओके, या हम टाइप कर कर उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन responds or reciprocates our question or conversation. Second is your auto correct. आजकल आप लोगों ने देखा होगा जीमेल में when you reply somebody, okay, तो आप कोई भी शब्द लिखते हैं, अगर वो गलत होता है, ऑटो रिकमेंडेशन, जैसे ही आप कोई भी मेल का जवाब देते हैं, द टाइम यू स्टार्ट रिप्लाइंग द जो मशीन लर्निंग मॉडल है, एनएलपी बेस्ड मॉडल है, दैट इज बीइंग जीमेल में वो मॉडल काम कर रहा होता है एआई का, जो हमें more easy and help us save some important time. Google search, Google हम सब लोग Google का इस्तेमाल करते हैं. All of us use Google, yes or no? Language processing या what is NLP only, अगर हम इतना भी लिखते हैं Google पर, तो एक सेकंड के अंदर, I think within less than a second, in a nanosecond, it will provide us a huge set of information. So we have never actually thought upon वो process क्या होता है, because Google, so that is really works. So when we talk of AI, just to recapitulate, artificial intelligence क्या होता है? AI is when machine starts mimicking human intelligence. जब मशीन आदमी की जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है, उसको मिमिक, उसको कॉपी करने लगता है, वैसा ही हूबहू वैसे ही काम करने लगता है मशीन. वी से मशीन हैज बिकम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, और वो करना डिसीजन. सो व्हेन मशीन स्टार्ट्स डूइंग ऑल दिस टास्क, वी से मशीन हैज बिकम इंटेलिजेंस. और जब हम आर्टिफिशियली एआई डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं. और ये तीनों आपस में कैसे डिफरेंट है, हाउ दीज थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर नंबर्स, दैट मींस तब आपका जो डोमेन होगा दैट विल बी नोन एज योर data science. Whereas if the data set which we provide to machine or input to the machine is in the form of images or videos, that time your data, that domain will be known as your computer vision. And if the data domain of AI. So I hope that all of you are understanding about AI. What is AI? What are the different domains of AI? How AI, different domains of AI we can understand, like I shared. And I hope all of you will try this rock, paper, scissor. So moving ahead, let's talk about some applications which you see in our day-to-day life. Okay, your life में apps actually work कैसे करते हैं, how these apps actually works. So let's try to understand उनमें उनका जो back end process है, how it works. Okay, that many local available online platform, food platform. But have you ever observed, but have you ever noticed that when you are using Swiggy or for say Zomato, after you have used, you start getting those recommendations.
You start getting those notifications on your mobile phone that, hey, this is lunchtime. Are you feeling hungry? Or onto that particular platform, they actually on the basis of your previous data means on the previous on the basis of previous surfing of which menus or which food items, which recipes you have clicked upon, it will actually provide you a ready-made, what you can say, you. Okay. That because there is no one sitting in manual or in person who is saving your data and then knowing that maybe other things, yes, but since there is that data, he is different recipes. That is how when Jignesh goes on to that Swiggy platform once again, he immediately, you will find that whatever content, whatever small videos you see on your screen at that point in time, they are all related to your interest level only. If you are interested to see listen some kind of song, a particular song, or a particular, you with all those content which is as per your liking. Again, it is because YouTube also stores the data set, our previous. That is the time that model actually saves or stores that data set in its memory, and then it works upon that memory, and then next time when we open their YouTube platform, it provides us with different natural language processing models for understanding their customers. अगर आपको ध्यान हो, if you all know that whenever you buy anything online, we all give that, they all ask for feedback, yes or no? And when they are asked for feedback, all these organizations understand what feedback we have given and actually what that feedback means for. So they use sentiment analysis, a model based on natural language processing, which actually helps the customer a wow satisfaction feel. And it has a data science model which actually helps us and predicts whenever we move into crowded places, some malls, cinema halls, parks, etc., or we travel also airports, etc. So if you go to your this regular Setu app, it will tell you that if we have come in close vicinity to some bad, that person was infected, whether he was seriously infected or he was a mild or moderate kind of thing. So you will get different dots all the time. Alexa, play this song. Alexa, what is this? Alexa, when this will be there? But have you ever observed, have you ever realized, thought that how does language processing, it is only one time train, it keeps picking up the data. हम लोग बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हैं जो एलेक्सा के लिए नहीं होते, उसकी डिक्शनरी में वो ट्रेन नहीं होते हैं, but it picks those words and trains itself. Is why when the machine takes builds the ability to learn from its experience, and when I'm using these words, जब भी उसके सामने कोई नया डेटा आता है, कोई नया शब्द आता है जो उसकी वोकैबुलरी में नहीं है, it so that it is able to answer, reciprocate next time. Facebook, all of you use Facebook or many of you use Facebook, yes students. So आपको जो है या ओल्ड फ्रेंड्स को अपने इमेज को टैग करते हैं, जैसे ही आप वहां पर पॉइंटर लेके कि वेदर but how to how to differentiate, it actually helps to track and all these fake posts and track and then work, trace and track so that they are not seen on our what you can say examples. There are many other examples where we are using AI in our day-to-day life. Now a very important question students, very important, what is not AI? आजकल हम लोग देखते हैं, we talk of smart television, we are talk of smart objects, we are talk of smart robots, we talk of all these things. So there is a very thin line, एक बहुत ही which
because it is very important. Now all these technologies what you are seeing, automation, okay, robotics, सेंसरी नेटवर्क्स, आप सब बहुतों के स्कूलों में, आप लोगों के काफी स्कूल बच्चों के स्कूल्स में एटीएल लैब्स होंगी जहां or ATL labs, but though, and when you program them, then they also start with the data they have been programmed. Like for example, a digital thermometer or a remote control. This one, robotics, immediately that robots comes in our mind. Okay, and these robots actually to create all those robots, like let's say there's a line follow robot. So line following robot means a robot which has been programmed just to follow a certain sensory networks also. So all these robotic sensory networks, they act में washing machine होता है, air conditioner होता है. Okay, now in washing machine we say it's a automatic washing machine, semi automatic washing machine, but still it's require वो पानी भी ले लेगा, उसको पता है कि इसमें गर्म है या these are warm clothes, these are winter clothes, these are summer clothes, तो इसमें कितना जो है क्या कहते हैं पाउडर डालना है या कितना वो करना है और कितनी देर तक इसको वो कर. So means what I'm trying to say, they are just what you can say application, they are just applications which can be termed, but era of pandemic और कोविड. ओके, हर जगह जब भी आप किसी मॉल में, आप जैसे खुल रहे हैं, मॉल भी खुल रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स भी, जिम, फेंसिंग और स्प्रेइंग द व्हाट यू कैन से sanitizer on your hand, because there is some sensor, proximity sensor that is put in over there, which actually works on the distance of the proximity, and then any object near to that But if that dispensing machine was really intelligent, it would have took else it will not spray. So step, अभी तक हम लोगों ने AI के बारे में बात करी है. AI क्या होता है, AI की डोमेन्स क्या है, कोई भी मशीन AI कैसे के बारे में हम लोगों ने we got a very brief what you can say understanding on that. Now let's understand purpose of AI. हम लोग artificial intelligence या AI को क्यों सीखे, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, what is place we live in. Okay, we all are surrounded by some problems, okay, some issues, some concerns. So we should now, since we have this very important, very powerful technology known as artificial intelligence, okay, so we should use this AI to find solution for these social problems which can create some social impacts. Now the question arises, हम लोग इस प्रकार की problems को where can you find out? Now students, when you will start creating your AI model identify the problem, तो आप सब लोग in a step by step. So आपको क्या issues दिखाई देते हैं जो day in and day out 24 hours by 24/7 आपकी लाइफ को, आपको जो है impact या affect करते हैं. Like for example, कुछ examples what you can see on your screen is like traffic accident, okay, and all those things which actually needs address. There could be any, these are some examples. Now so whenever you start working on AI model, जब भी आप अपने AI models बनाएंगे या बनाना शुरू करेंगे, you will need to have a problem that can address to any of the social causes or concern problem. Now you must have, in your social studies, you must have learned about or so sustainable development, which actually can help us to provide themes or thematic based approach to develop any AI enabled solution. Yes, sustainable development goals, there are 17 sustainable development goals, as you can see on yourself in a school, like about no poverty, education, gender equality, clean,
water and sanitation, and others. So in all, there are 17 such sustainable development goals, and one can take any. अगर आप अपने सराउंडिंग्स में भी कोई प्रॉब्लम देखते हैं, अपनी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम देखते हैं, यू कैन ऑलवेज रिलेट दोज प्रॉब्लम विद दिस एनी वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली विल हेल्प. Problem, it will actually help you to address to that larger social problem, and how you can use AI. That is what, when you start developing your AI models into that. So this sustainable development goals provide you the purpose of using artificial intelligence into day-to-day life. Now we talk of possibilities. Okay, that jab ye AI, now all of us know that possibilities it brings. Try to understand artificial intelligence, how it is actually impacting in all finance. से आप लोग, हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में, चैनल्स में देखते हैं, बैंक फ्रॉड्स हैपन्स, ऑनलाइन फ्रॉड, साइंस, एआई बेस्ड happen, so that they can curtail, जिससे कि वो उसको रोक सके, कर सके इन सब फाइनेंशियल फ्रॉड्स में. स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर हम लोग अपने मनी को 14 days और इन नेक्स्ट मंथ, 1 month और 6 months, so that, and then it gives important suggestion to its customer whether to hold the stock or to sell the stock basis on those prediction. So that is where data science is finding is very good use in financial in the field of finance. Education, that is started providing all those solutions to education, how different student has his or her own style of learning, which actually helps you provide feedback. AI models to give you correct feedback on your performance level. They can give you what you can say correct, tailored made or customized solution as per your learning ability and capabilities. Entertainment एक ऐसा field है which everybody loves and likes. Yes or no? Yes. Now in entertainment nowadays we and your other platform, whether it be Amazon, whether it be Netflix or any other, they are all using data science models of AI to understand how a different, how a particular जो audience है वो देखना पसंद करती है. तो मैं एक टाइप का कंटेंट था, अब बहुत वेरिड डाइवर्स कंटेंट पर इमेज पिक्चर्स बनती है, एंड एवरी एक्चुअली इज रनिंग this research using this AI models. Gaming, I think gaming के बारे में आप सब से बेहतर कोई नहीं जानता होगा स्टूडेंट से, that where how does AI actually works in that. All games, whether it's PUBG or all other online games, they are using different AI models and machine learning models to give that immersive experience to all of you. कि it gives you a feeling कि आप लोग उस गेम का हिस्सा है, means you are not playing a person, आप खुद ही जो है फिजिकली उस गेम को उनके जो कैरेक्टर्स है गेम के, आप भी उसका एक हिस्सा हो. सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, सीसीटीवीज एंड ऑल दोज, इट्स AI के different models is being used to predict that how much what will be the cost of particular what you can say seed or crop in that particular month. It so that it will give you maximum प्रोड्यूस और आउटपुट. और जब कोई भी अगर डिजीज लग रही है तो यूजिंग कंप्यूटर विजन it actually can actually detect, seeing the color of the leaf or the dimension of the leaf or the spots on the leaf, that whether the plant is healthy or it has got certain disease. So in agriculture also we are finding different use of artificial intelligence. Transportation, yes, everybody knows that transportation AI is actually playing an important role. We all have
there, that is nothing but use of artificial intelligence being used to give faster treatment, give that personalized treatment to that. One good example, when we are talking of कोविड की जो वैक्सीन डिस्कशन किया ना कभी सोचा होगा, बट दो साइंटिस्ट, दो रिसर्चर्स, दो डॉक्टर्स, दे हैव एक्चुअली यूज्ड डेटा साइंस, उस डेटा को एनालाइज करना, उसके डीएनए स्ट्रक्चर को समझना, उसके जीनोम्स को समझना, उसके जेनोमेटिक्स को एनालाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज है. बट सिंस नाउ एआई इज देयर, सो एआई इज क्विक, एआई इज एफिशिएंट, सो डेटा साइंस न्यूरल मॉडल our day-to-day life. So that is why it becomes very important for the generation like you. आप लोगों की जो जनरेशन है, जो आप लोग आज इस सेशन में बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी क्लोजली उसको समझना और उसके बारे में और पढ़ना, एंड हाउ यू कैन डेवलप दोस स्किल सेट्स सो दैट फ्यूचर के लिए आप लोग रेडी हो सके. यू बिकम एआई रेडी फॉर ऑल दोस जॉब्स जो इन इंडस्ट्रीज दैट वी कांट इवन इमेजिन आल्सो. In this kind of job at present, but future will be of machine learning specialist, data. You are hearing jobs where we talk of where organization talks of data scientists, machine learning experts, cognitive load managers. जॉब करियर के लिए तैयार होंगे, भले ही आप खुद का एंटरप्रेन्योर्स भी, स्टार्टअप्स भी क्रिएट करेंगे. यू शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू शुड बी हैविंग दो स्किल सेट्स ऑफ एआई एंड एआई डोमेन्स व्हिच एक्चुअली विल हेल्प यू ग्रो वेदर यू आर योर in that point in time. एंड देन तो आप सबसे पहले उसके प्रॉस और कॉन्स को अपने दिमाग में रखते हैं, उससे अच्छा क्या होगा और उसका बैड. That is what is so your moral values actually plays a very high percentage role in deciding something. Okay, then only you go for that. Similarly, when we are talking of AI, now AI is a emerging technologies, like I have just now said. So some months back, okay, I think 6 to 7 months back, now all these OTT platforms were beaming, or they were all kind of content was being served in these at these OTT platform. But then Ministry of Content होना चाहिए और कितना using the when we are using this AI. Okay, so what now in such scenarios are more in a very judicious way. That means we should, where we are using AI for our social good. Okay, now let's try to understand with some examples. Now when I'm talking of accessibility, it is reach. Okay, now your generation, all students, those who are participating in your generation, कितने अच्छे से खेल सकते हैं. You understand technology much better than your teachers, your parents do, because you are digital natives, and all of us, our generation basically is digital migrants. Okay, the student should be provided with the accessibility or reach to all those kind of AI tool sets, which actually on which are when you will be doing hands-on session on all these AI tool sets, whether it's for NLP or nurture the kind of skill sets that you will require for your future jobs. So आपके अंदर वो skill sets अभी से बनने शुरू हो जाएंगे और आप इस AI को अच्छे से समझने लग जाएंगे कि how it is being prepared, first developed or created, and second what
you need to do, how you can actually prepare yourself for that. So and that can only be done when you have access to something. अगर आपके पास मोबाइल्स नहीं है, अगर उसको कैसे समझेंगे, उसमें जो डिफरेंट एप्लीकेशन है उनको कैसे समझेंगे, बिकॉज जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करते. सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एआई एथिक इज प्रोवाइडिंग एआई एक्सेसिबिलिटी टू ऑल आवर स्टूडेंट्स, टू यंग जनरेशन, सो दैट develop or nurture those skill sets. Then move to the next AI ethics is a data security. Now this is a very 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 burning issue young generation who actually are into the more and more into the data. Now all of you, for all of you, if I have to say this, for to live, okay, the basic thing what you require to live is, first it used to be said, three essential commodities to be alive or to be living. Yes, and that why? Because an important question is data. Are we using our data properly? First of all, when we talk of data, many of us think that data is only that 3 GB, 4 GB, 5 GB, that net data what we talk about. No, data is beyond that. सबसे पहले तो मैं डेटा को समझना चाहिए. अभी भी हम बहुत सारे लोगों के लिए डेटा केवल वो होता है 3 GB, 4 GB पैक जो डलवाते हैं, दैट इज व्हाट. नो, दैट इज नॉट डेटा. वो तो केवल एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेक्ट वे टू यूज इट. डेटा इज एक्चुअली व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन डेटा साइंस, इन person on this kind of data. Yes, same way WhatsApp and other social media, that is a kind of a data. So when we are talking of data security, that means how we can secure, okay, not a generation, but it's a common I would say characteristic now it has become. Whenever any family who goes on vacation for to their anywhere, what is the first thing that family does, what the family member does? Everybody starts clicking their selfie, the group images, and they do this on locations also. Okay, live locations also. And if they are traveling for by air, they show the map there and they will be traveling to, let's say, Shimla. Okay, so वो पूरा मैप भी दिखाते हैं. Thought on that, who actually is asking for all these kind of information? Nowadays in your mobile phone you download new application every day, or let's say every moment, and then and all these application, whenever you are downloading and you are using, they ask certain permissions from us. They ask us to permit their gallery, contact list, there are webcam, okay, all the location, etc. But have we ever thought why they are asking all these permission? But by providing all this permission, actually we are helping them enter into somewhere assistant, and you go to Google, you will find, go to my activities on Google, you will find whatever you have done in last month, it will आप कौन सी शॉप के आगे से निकले थे, आपने कहां पर शॉपिंग करी, it will give you the time with timing and dates. So it actually then starts tracking you everything, and that actually sometimes becomes very hazardous. So that is where we need to say data. So that is an ethic. AI and it plays a very important role in artificial intelligence, that how we actually are using our data set.
Data is the new gold that has been now in our times when we were in colleges, when we were in school, we used to learn. We were taken by the data. Now you can see for yourself that every big company month of their working or of that startup has the database, so they are buying the database of that particular startup so that their data sets increase. Does not become inefficient work as it does not addresses the problem what we thing. एग्जाम्पल आर एआई प्रोजेक्ट्स एआई प्रोजेक्ट्स जो आप लोग भी बनाएंगे इस सेशन के बाद जब हम लोग बूट कैंप्स में जाएंगे जो भी स्टूडेंट्स ऑल दो स्टूडेंट्स हु विल अप्लाई and show their interest for our boot camps which are going to happen in future, maybe after in summer times or after examination, so they will be taken through a journey where they will be also where you all will be creating your own. I am trying which have been developed, which have been created. This responsible AI for youth program. I think many of you must have heard about this program. This was done last year, and it started in 2020, and last year the final was there. So it was a program for all the government schools, which was organized by Intel in collaboration with the government of Ministry of Electronics and Information Technology, and Intel to do this program, a responsible AI for youth, which was a national program for all the government school. It was in this government school could only participate to give their ideas. So they shared their ideas on which they innovate. From across India, students, you won't believe, more than 56,000 students shared their ideas. That means they wanted to share their end. Five students got shortlisted, and these 125 students then were taken to a boot camp of 2 months, taken to आइडिएशन, और फिर उसका पाइथन लैंग्वेज उनको के बारे में बताया गया, और फिर उनको एआई मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग पाइथन लैंग्वेज और पाइथन के वेरियस पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज को यूज करते हुए उनका जो आइडिया था उस आइडिया को उन्होंने एआई मॉडल में क्रिएट किया. एंड देन द 20 प्रोजेक्ट्स वर लास्ट ईयर they were awarded. Okay, and this was done on a national platform where the Ministry of Science and Technology, Minister for Science and Technology was there. And this program, this Intel and GUJCOST program, building AI readiness for Gujarat, this is the first stage today. What we are doing with you, the session, 2-hour session on what is AI, artificial intelligence thing. Then students who will be applying for it, and then they will be taken through a journey where we will be our experts, our Intel trained experts, industry expert, आप लोगों को पाइथन के बारे में, पाइथन पैकेजेस, पाइथन लाइब्रेरीज, और उससे फिर हम लोग एआई मॉडल्स, डेटा साइंस, एनएलपी या कंप्यूटर विजन के करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो यू विल आल्सो गेट अ चांस टू क्रिएट योर ओन एआई मॉडल, एंड देन यू विल गेट चांस टू शोकेस वन एग्जाम्पलर प्रोजेक्ट नोन एज हैप्पीनेस ग्रुप. ये एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारी 3 गर्ल्स है, सलवान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली में एक स्कूल है, सलवान गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ की 3 लड़कियों ने ये प्रोजेक्ट बनाया था जो कि उस समय क्लास 10 में हुआ करती थी. अब तो खैर दे आर पास्ड आउट एंड आर इन कॉलेज. ओके, सो ये हैप्पीनेस गुरु है. तो हैप्पीनेस गुरु इन लोगों स्टडी रिसर्च करा कि जो लाइक क्लास 10 एंड क्लास 12 उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बट बिकॉज ऑफ एंड व्हाट हैपेंस दे वो जो स्ट्रेस है, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ता चला जाता है, और फिर जैसे जैसे
आप लोगों ने सुना होगा, उसकी तरफ जो है वो स्टूडेंट्स थी। वहां से करीबन उन्होंने एक क्वेश्चन क्रिएट करा, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, थॉट प्रोसेस, मीन्स जो साइकोलॉजी 100 girls around them, and that actually helped them go get the data. Once that was collected, and then this model, they came out with this model, AI enabled model. और सबसे ये थी कि जब इन्होंने ये मॉडल AI मॉडल और उस मॉडल को टेस्ट करा, देन वन ऑफ द गर्ल्स फाउंड दैट शी इज आल्सो ऑन द ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन, वो भी उस स्टेज की तरफ जा रही है। देन शी टुक इमीडिएट स्टेप्स, कंसल्ट द काउंसलर, actually either were stressed or anxious, this one. So that is where and that is how they gave this model name as happiness group. That means how they can actually help their peers, their friends, to come out of that stressful situation, those tense situations, and those moments of anxiousness, and help them lead happy jovial life. सो बालिका विद्यालय ईश्वर नगर दिल्ली से ही है ये भी। तो ड्राउजिंग क्या होता है, जब हम लोग कोई काम नॉर्मली ये होता है ना कि जब when you are reading or when you are preparing for exams and you are trying to concentrate and all of a sudden you start winking or you start feeling drowsy और आपको नींद आने लग जाती है और आप जो झपकी लेके आपका सिर नीचे इधर उधर हिलने लगता है। सेम when you must have observed when you are traveling by road, आप जब लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करते हैं रोड पर, तो इधर योर पेरेंट्स और द ड्राइवर और द कैब ड्राइवर और द बस ड्राइवर जो बहुत तो वो स्टेइंग पर ही जो है, दे स्टार्ट विंकिंग, दे स्टार्ट फीलिंग ड्राउजिंग, दे स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। जिससे कि आप जो हम लोग अपने न्यूज में सुनते हैं कि हाईवे पर ये कार जो है एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग हताहत हो गए, या सो मेनी गॉट इंजर्ड, सो मेनी डेड। जब उसका रीजन वी गेट टू नो दैट द ड्राइवर फेल asleep, because of that the accident happened. So to avoid such kind of incidents happening in future, these two girls came with an idea that they created this AI system or AI model to ensure the safety of passengers, and वो स्टेज आने लगे जब उसको स्लीपी फील हो रहा हो या ड्राउजीनेस महसूस हो रहा हो, सो ये जो मॉडल था इट्स डिटेक्ट दैट एंड इमीडिएटली रेजेस द अलार्म सो दैट द ड्राइवर गेट्स कॉशन्ड, और एकदम से उठकर जो है ड्राइवर को अलर्ट कर देता है, और फिर ड्राइवर जो है उसको उस अलार्म को मॉनिटर। इट इज सेविंग दोज हु ऑल विल अप्लाई फॉर द बूट कैंप व्हिच शैल बी स्टार्टिंग सून। यू पीपल विल बी आल्सो टेकन टू अ कंप्लीट जर्नी to make you learn. How can you learn more? That's a very important question. आप लोग इसके बारे में और कैसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, because it's a wonderful opportunity for all of you. First, because it's a free of cost program. If ये जो प्रोग्राम जो आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, when you will obviously when after this first stage, that is today's session, जब आप लोग ये अपना इंडस्ट्री जो आपके कोचेज होंगे, जो इंटेल ट्रेंड कोचेज हैं, इंटेल कोचेज हैं, दे आर बेस्ट इन द यूज्ड इन मोर देन 20 countries where इंटेल AI for youth program is there. So that is what this is a very good platform for all of you to be a part of this program. और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको बूट कैंप का जो नेक्स्ट स्टेज है वे उसमें अपने आप को अप्लाई करें, बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड डेवलप योर आर्टिफिशियल students known as AI students community. And this is a very wonderful community wherein they talk about their ideas and they learn. यहाँ पर learning sessions भी हम लोग सेमिनार जहाँ कैंप्स के बारे में कैसे मॉडल्स क्रिएट करते हैं, मीन्स ऑल डिफरेंट स्ट्रेटजीज दैट और लर्निंग दैट आर
as AI Student Community of Intel. So the link you can see on your screen, https AI, and I'll request my colleague Sapna to also share this ad so that you can with this, we come to the end of this session on what is artificial intelligence. The first session in the series of this, where we talked about to give you a glimpse. To give you something on the to talk about and help you understand natural language processing, how it is used in different games, and then we also talked about sustainable development goals, how we can use AI in addressing our global, our social or local issues and concerns, and apply in our day-to-day life. We saw in finance, education, health industry, agriculture industry, transport industry, safety and security industry, and all these industry, and that is where how they are also going to impact the what you can say the jobs of our future. So अभी से अगर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे अपने करियर first session of today's, there will be a next first session which will be boot camp. The more information will be shared with all of you through your schools, through your teachers, and I think this I would like to take your permission. I hope all of you enjoyed this session, and hope this session was you enough to join the boot camps and the next sessions whenever it is going to happen, and help our Gujarat there. So with this, we come to end of this presentation, and now I would request Dr. Payal to please take on the session. Over to you, Payal. Thank you very much, sir. It was really very nice and interesting session. You showed real life examples, practical applications, and there were many learning lessons that came out of your presentation. We are not a part of this session for next student session, and then we plan for a So thank you all the students was missed during the buffering part. It will still be available on the GUJCOST YouTube channel. So you can anytime go back and review the session again whenever you and we look forward that the students will participate in the